In this part, we will be discussing about the conservation biogeography. As we have seen in the previous lot of topics that how we are destroying our environment. So this particular topic is dealing with that how we can conserve the biogeography of today. The study of biogeography has deep roots with much of the fundamental work completed by the end of 19th century. So even though it is older work, nevertheless the contemporary relevance of biogeographical research has never been greater. अगर हम बायोजियोग्राफी को देखें तो इसकी जो जड़ें हैं वो कहीं जाके 19वीं सदी तक मिलती हैं. इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत पुरानी साइंस है और हो सकता है इसकी के मॉडर्न डे एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन ऐसा केस नहीं है. इसका मॉडर्न डे बायोजियोग्राफी और मॉडर्न डे लाइफ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आज हम वही पुरानी लाइफ जो हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के दर पे हैं. सो द current scientific consensus is that we are entering a unique period in the history of Earth, a dramatic transformation of life on Earth, reminiscent of some of the events of the far past that led to mass extinction. We have discussed about the mass extinction in the paleontology part of this course. In there, we discussed that how a particular event destroys the species at very high level, and this is called mass extinction. And similar thing is happening, and there is a scientific consensus. बहुत से साइंसदान जो हैं इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें ऐसे ही किसी इवेंट का सामना है जैसा कि मास एक्सटिंक्शन के दौरान हुआ करता था. जो स्पीशीज़ हैं वो इस लेवल पे एक्सटिंक्ट हो रही हैं जैसे किसी मास एक्सटिंक्शन में species extinct हुआ करती थी. And we have called that particular era in which we are living or the particular mass extinction that we are the cause is Anthropocene. Anthropo means related to humans. So this is the mass extinction that we are causing. So ultimately, the degree to which human action alters the diversity and distribution of life on Earth depends on the willingness and capacity of societies, organizations, and individuals to conserve what is left of the natural world. So ये जिम्मेदारी हम पे आ जाती है कि हम एज ए सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल लेवल पे हर मरहले पे हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं. So, however, conservation resources are limited, and it is imperative that we make rational, empirical, grounded decisions about what to invest, where to invest those limited resources, both taxonomically and geographically. So, for example, if there are some keystone species, protect them first before protecting the other species which are present there. So, in this way, कि हमारे पास जो वसाइल हैं वो कम हैं, करने वाले काम ज़्यादा हैं, और उन करने वाले कामों में से हम उन कामों का इंतखाब करें, उन जानवरों को बचाएं, उन जानदारों को बचाएं और उन हैबिटेट्स और उन रहने की जगहों को बचाएं जो कि ज़्यादा अहम हैं, बजाय इसके कि हम अपनी सलाहियतें किसी और जगह पे सर्व करते रहें. So biogeography has an essential role to play in this endeavor, providing tools and concepts to identify the key processes and to make realistic prediction of what may happen to species and ecosystem under different scenarios of human development. So biogeography इस लिहाज से मुनफरिद है कि it can identify the key processes के कौन से ऐसे तो आमलात हैं जो कहीं पे मौजूद हैं, और अगर वो डिस्टर्ब होते हैं, अगर उनको कोई डिस्टर्बेंस होती है तो व्हाट विल हैपन कि इकोसिस्टम एंड दूसरे सिनेरियो ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वो कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्टडीड इन द बायोजियोग्राफी एंड इट कैन प्रोवाइड अ comprehensive view that how we can tackle those conservation problems, and that we all will be discussing in the conservation biogeography.